Subscribe to my channel The Classroom and press that bell icon so that you never miss any future update. Hello everyone, welcome to my channel The Classroom. So today we'll be understanding how to store the data which is present into Dataframe directly to the CSV file using Python Pandas. Specifically, we are going to understand the function that is called toCSV. Okay, this is the function of Pandas module which we are going to learn today. But before I start with this session, I want you to help me with something. ठीक है, मुझे चाहिए कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें बताओ कि आपको किन टॉपिक्स के बारे में वीडियोस चाहिए, मतलब कौन से टॉपिक्स के बारे में आप वीडियोस देखना पसंद करोगे. Also, if you are liking my work, please hit that big fat thumbs up button so that I get encouraged to make more such videos. So now we'll be starting with our session. So the first question जो हमारे दिमाग में आता है, CSV फाइल में ठीक है हम लोग डेटा फ्रेम का जो डेटा है वो रखेंगे, बट व्हाट इज CSV फाइल? ओके, सो CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, राइट. बट कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज क्या होता है? एक ऐसी फाइल जिसमें हर एक वैल्यू कॉमा से सेपरेट हुई है, ठीक है. द कॉमा इज डेलिमिटर ओवर देयर. सो व्हाट डज इट एक्चुअली डज इज, यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो टैबुलर फॉर्म में है, राइट. बट दैट टैबुलर फॉर्म जब उसको मैं CSV में सेव करूंगी, CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करूंगी, तब मेरा जो डेटा होगा वो कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा. सी ओवर हियर, ईच वैल्यू इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉमा, राइट. सी Sally Whittaker, comma 2018, comma McCarran, how? So what here it is happening? Row wise पूरा डेटा मिल रहा है मुझे, but हर एक वैल्यू कॉमा से सेपरेटेड है. So this is what is CSV file all about. So how we can export any tabular form to CSV form is, we can use Excel, we can use Notepad, we can use Google Docs. Okay, we are having many options. So mostly हम लोग सारी चीज़ें Excel से करेंगे. So let's get started with programming already. देखते हैं toCSV function कैसे use कर सकते हैं Python Pandas में. This is the program which I'm going to use today for making you understand that how to use toCSV function of Pandas. Right? देखो, first line मेरी as always importing Pandas. Right? Why do we do this? Because we want to use the functionalities which are offered by Pandas module. इसीलिए मैं इंपोर्ट करवा रही हूँ पांडास को. देन देर इज वन एडिशनल मॉड्यूल दैट आई एम इम्पोर्टिंग इन दिस प्रोग्राम, इम्पोर्ट OS. अब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड अगर हमें कोई भी फंक्शनैलिटी यूज करनी है तो पाइथन में उसके लिए एक अलग मॉड्यूल बनाया हुआ है जिसका नाम है OS, राइट. यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि ये OS मॉड्यूल हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं. फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक काज नाम की डिक्शनरी बना रही हूँ जिसमें मैं वैल्यू स्टोर करवा रही हूँ. Into cars dictionary, my key values are brand and price, and the values for brand are Maruti and BMW, whereas the values for price is 22,000 and 25,000 respectively. Okay? Then I'm converting this dictionary into Dataframe. So how I can convert that? See, if you are not understanding this, you might want to watch my previous videos about Dataframe. Right? If you want to watch those videos, I have kept the link into I icon over here. Also, I'll keep the link into description box. Do check out those videos. So, we'll be continuing. यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने जो मेरी डिक्शनरी है कार, right, I'm converting it into data frame and I'm storing it into the variable called df. Okay? Then, if not, say, I'm applying one condition. What I'm applying, if not os.path is file, means if this is not file already made, what I want is, if my CSV file is already made, then I want to append the data. And if it is not made, then I want my program to create one new CSV file और उसमें वो data store करवाए. ठीक है? See, so for that, what I have to do is, मैं एक condition लगा रही हूँ. If not, अगर ये फाइल नहीं मिल रही है, सी पाथ एंड इज फाइल आर द फंक्शन ऑफ OS लाइब्रेरी और OS मॉड्यूल. ओके, दैट इज व्हाई आई हैव इंपोर्टेड OS हियर. अगर ये फाइल नहीं बनी हुई है तो मुझे क्या करवाना है,
I want to create a new file. तो यहाँ पे देखो मेरी न्यू फाइल कहाँ पे, मैंने यहाँ पे पहले तो पाथ दे दिया है, पाथ दे दिया और यहाँ पे मेरी फाइल का नाम है along with extension CSV, राइट. और पाथ के आगे हमेशा you have to write this R, small r, it stands for reading, राइट. सो अगर ये फाइल ये वाले पाथ पे अगर ये फाइल नहीं है, then what I want my program to do is to make one new file named one.csv on my desktop, right? If it is not there, what I want is df.tocsv, मतलब data frame में जो data है that should be going to CSV, okay? And where that CSV file is, I have to give the path over here. तो मेरा path जो है वो क्या है, ये पूरा, right? देखो कॉमन मिस्टेक है कि हम लोग फाइल के बाद एक्सटेंशन नहीं लगाते हैं. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू गिव द एक्सटेंशन ओवर हियर. देन आई एम टेकिंग इंडेक्स एज फॉल्स बिकॉज आई डोंट वांट इंडेक्स टू बी डिस्प्लेड, राइट. विच इंडेक्स? If I generally print my data frame, then what happens is I'm also getting the row indexes, right? I don't want the row indexes to be stored into my CSV file. That is why मैंने यहाँ पे index में क्या कर दिया, false कर दिया. header में मैंने लिखा है true. अब header मतलब क्या, मेरे जो columns के name है that is brand and price, वो मुझे CSV फाइल में store करवाने हैं, right? So that is why I'm keeping header true. एंड ये हेडर ट्रू तभी रखोगे जब आपकी फाइल फर्स्ट टाइम क्रिएट हो रही है, राइट. अगर आप डेटा अपेंड करवा रहे हो तब आपको हेडर ट्रू नहीं रखना है बिकॉज अगेन एंड अगेन आपको कॉलम का नेम नहीं देना है. यू जस्ट हैव टू गिव द कॉलम नेम ओनली वंस, राइट. नाउ सी इफ नॉट, अगर वो फाइल प्रेजेंट नहीं है तो फाइल बना के हमें डेटा स्टोर करना है. अगर प्रेजेंट है देन एल्स पार्ट में हम लोग आएंगे. If that file is already present onto desktop, means if one.csv is already present onto my desktop, then what I have to do is I have to store the data frames data to CSV. Where is that CSV kept? Onto the same path, right? Onto my desktop. And the name of CSV file is one.csv. Now here I am adding one additional parameter that is mode. मोड क्यों हम लोग लगा रहे हैं? क्योंकि अगर वो फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मुझे उसे ओवरराइट नहीं करवाना है. मुझे चाहिए कि मेरा जो नया डेटा मैं रख रही हूँ उस फाइल में, नया डेटा जो स्टोर करवा रही हूँ वो अपेंड मोड में हो. अपेंड मतलब क्या, हमारा प्रीवियस जो डेटा होगा वो उसमें पड़ा रहेगा, वो फाइल में वो भी स्टोर्ड रहेगा और ये जो न्यू डेटा है दैट वुड बी एडेड टू दैट फाइल. So that is why the mode, यहाँ पे एक extra parameter मैंने दे दिया that is mode, and mode is what? Append mode, right? Then index, मुझे जो rows का index है वो यहाँ पे भी नहीं चाहिए, that is why I have kept it as false. और header, अब देखो यहाँ पे header भी false हो गया. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बार, मेरी ये फाइल बनी हुई है one.csv, मतलब ऑलरेडी मेरे कॉलम के नेम ऊपर लिखे हुए होंगे. तो अब मुझे क्या चाहिए कि अब वो जो कॉलम के नेम है वो ऊपर नहीं डिस्प्ले होने चाहिए. दैट इज वाई यहाँ पे मैंने हेडर को रख दिया है फॉल्स, राइट. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल सेव दिस प्रोग्राम, बट बिफोर रनिंग दिस प्रोग्राम एंड बिफोर शोइंग यू द आउटपुट आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. आर यू लाइकिंग माय वर्क? If you are liking my work, then please let me know into comment section. Also, hit that big fat like button and subscribe button too. Right, because if you hit the like button, if you comment me your views, then I get encouraged to make more such videos. So now let us proceed and see what the output occurs. Right, I'm saving this program and then I'm running this program. Right now here onto shell I won't be getting any output. Why? Because I haven't printed anything. I am not giving any command for printing, right? But see, these three angular brackets are back. That means that my execution is completed. Okay, the program execution is completed, right? So, where I'll be checking the output, I'll be going to my desktop and I'll be going to this one.csv. From there I can check the output. Okay, so see, this is what we are getting into output, right? Dekho. I'm getting Maruti and BMW. Here the Maruti and BMW are being repeated because I already executed our program once.
Now, because I am into append mode, Maruti and BMW are being returned again. Right. So this is the output that we are getting. See, you can see Maruti and BMW with price 22,000 and 25,000 respectively. That is what we have given there, right? If you are having any doubt into this session, please let me know into comment section. Also, if you like my video, hit that thumbs up button, subscribe to my channel, and don't forget to press that bell icon so that you never miss any future update. Thank you for watching.